So good evening, everyone. Let me know if I'm not audible. So I'm going to start now. So afternoon, we have seen what is text formatting, hyperlinks, headers and footers, and all, right? And we were seeing how to insert images and how to format it. So let's do with that images. Yeah, over here. So we can insert image by this menu item. This which one? This option, insert option. So when we click on insert, we will get image, right? And there are various ways in which we can insert any image. As I told you before, we tried first one, that is upload from computer. Now let's try second one. Do you want me to try first one again, or shall we go with the second one? This or this? Do you have an idea about this? Please at least tell me in the chat. Anyone listening? So let's go with the first one since none of you answered. So we can choose any. Suppose I choose this image, this image. All right. So there will be some image options over here. When I just inserted this image using insert image upload from computer and then selected that image. Now I can do some formattings over this image. What are those? Let's see. I'm selecting this image. See, once I select the image, can you notice over here? Notice over here. If I select the image, I'll get image options like this. So I click on image options. We have various options like size and rotation. Like we can rotate it to any angle. We can change the width or height. We can change everything that is about size and location. Then we have something called as recoloring. Since this is in white color, we can recolor it to any other color. Like for example, I'll go for purple. See, this is how we can do it. And we can even do the adjustments like we can adjust the brightness, opacity, contrast, etc. etc. Done. So that is about image options. So we inserted an image using first method, right? There are few other methods also. We can try search the web. Search the web. When we click on this, can you see at the side of our screen, we got our Google search. So we can search anything over here. For example, what should I search for? See, I can select this and press and insert, and I can adjust it. Got it? So this is the search the web option. Second option. There are few more, that is drive. Third one, drive, from the drive. So again it will be appeared over here right side. When I select that image, see, it will be inserted over here. Done. Then there's a fourth way, that is from Google Photos and camera.
Then by link, we can paste a link over here, any link. Then we can insert an image. I'm copying a link. I'm pasting it over here. See, there's some issue with that. So we need to have license for that particular Google image. That is another way in which we can insert any image, in short, right? So that was about inserting images and formatting it. Then we can also add some shapes. So if you remember, I have told you about drawings, insert, drawing. How do we add some shape over here? Insert, insert, go to drawing and click on new. Over here, we can draw anything. See, we have shapes, arrows, call outs, equation, anything you can uh, work out with. For example, you want to go with this one. All right. So this is some shape. You can increase the size. You can change the color. You can change. Suppose I added this image. See, like this. And save and close. This will be added as an image. So this is a drawing I added, which I added as an image to your document. That is about shapes. Then we have something called as translating the document. So if you can see, we can translate our document in various languages. Suppose this is our document. I can go to file. Suppose this is our document. File, tools. You have tools, right? Tools menu option. From there, you can access translate document. Choose any language over from there. Suppose I go for Chinese, translate. So I got my document translated in Chinese language. Done the entire document. So you can choose accordingly with your preference of your language, right? In this question, you need to translate your document in at least four languages, regional languages. Done. So this is about the first question. Any doubt in first one? Should we move ahead with the second one? Any doubts? Anyone? At least say yes or no. Are you listening or not? Okay. So let's go with the second one. So second question is about mail merge. So you already know about it, but still in brief, I'll explain you about it. Mail merge, mail merge allows us to send email with same content, same message, same content. You can send it to multiple recipients at once. Like it makes it to give us the ease to send any same content to multiple people,
right? We only need to change what? Recipient's name and details. Whatever details, a place. Now let's work with that. So we can do mail merge by using this add-on. You can access it from the right side panel of your Google Docs. See, can you see? This is the mail merge. Right side will be there, and at the right side, I'm clicking on that first. So there are four types in of mail merge. So we can select any one: letters, envelopes, emails, labels, etc. So letter is usual letters. Envelope, the cover on which we write the address and all. Email, what is email, and labels are some like badges or some thing that will be there on luggage, cards like things on which we print addresses, etc., etc. So that is labels. So let's see how it works. We will try out any one of this now. Let's go with letters. Or do you want me to go for another one? Letters or emails? Which one? In this, we need to send email to 10 email. In this question, this is asking about email. So let's go for email. ठीक है? लैब में आपका ये है ना email है ना? So So I'm clicking on email. There's already a sheet that I selected, class details बोलकर. So I'll change it and I'll select it again. See, select a spreadsheet. We first need to select the recipient's emails, names, whatever data we want to fill. We need to first select that by entering it in Google Sheets. So spreadsheet में एक data रहना basically, right? So let's see what our class details data have. I'm going to sheet. You can access it from the 9 dots, right? So I'm searching for class details file. Oh, we are unable to find it. Let's just create a new one. No worries. So let's go for first name, add email address. Simply email send करना है ना email address. Name and email. Let's say. Suppose first Nihal. Nihal, tell me your email ID. Actual email ID. Why, Write it. ma'am? Write anything. No, it will go come to your email ID. It will be working actually. All of you, please, all three of you, please send your email IDs over here. Okay, ma'am. I will send in chat. Yeah, yeah. Roll number 31 is, what's your name?
Please type your name in the chat. So I created some data, right? So I'll name it as MSCS1 emails. Done. So let's link it to that. I'm selecting a spreadsheet that I named as MSCS1. Yeah, MSCS1 emails. Right? I selected that particular spreadsheet. Now it's done. So let's say there is some email I'm writing like dear. Something like this. So I'll insert a merge field after dear. I'll merge the field name. So see name. And over here I'm merging email. So it will be sent to all these emails. I'm clicking on next. The same lab record documents will be sent to you. Just check your inbox. सी आई सेंट में आ गया, देखो मेरे इनबॉक्स में. I sent this document to who all I sent this. Bilal, did you receive it? नहीं आया मैम अभी तो। सी निहाल चला गया ना आपका, सेंट में आ गया मेरे पास. निहाल सी तीनों को चले गया ना. सी सेंट वाले फोल्डर में आ गया देख. So it's sent already. You can reload and check. Okay, that is how email works. Next, next we have data sorting, data filtering, and mathematical and text functions using Google Sheets. Any doubt in Google mail merge? नहीं है मैम मेरे मर्ज में। ठीक है, चलो. Shall we go for data sorting then? यस मैम। Okay, let's use this data. We have this huge amount of data over here. Employee data. Okay. Now, first we will go for sorting. You know about sorting, right? So I explained in the class and I told you कि A to Z. Let's see. I'll show you. In how many ways can we sort it? We can sort it A to Z या फिर Z to A. राइट, वैसा कर सकते सॉर्ट. बट एक प्रॉब्लम क्या रहती, ये फर्स्ट जो हेडिंग वाली है ना लाइन, वो भी सॉर्ट हो जाती क्योंकि ये एफ है, एल है. ये भी नीचे सॉर्ट होकर आ जाती. लाइक आई शो यू. फर्स्ट लेट्स से डेटा पर गए, सॉर्ट सॉर्ट शीट करे. सपोज वी आर गोइंग फॉर ए टू जी. सी आपकी हेडिंग कहाँ चले गई, 16th लाइन पर आ गई ना. इफ यू नोटिस, डिड यू नोटिस दैट फर्स्ट नेम लास्ट नेम कहाँ आ गया?
यहाँ आ गया, राइट? समझ आया ये चीज? यस। सी, ये क्या था? दिस वॉज योर कॉलम नेम्स। तो ये भी सॉर्ट हो गया। तो ये ऐसे नहीं होना बोलकर आपको करना है, तो व्हाट यू नीड टू डू, आई टोल्ड यू अबाउट फ्रीजिंग, राइट? ये लाइन को वी विल फ्रीज फर्स्ट। ठीक है? हाउ डू वी फ्रीज इट, डू यू रिमेम्बर? कैन एनीबडी टेल मी हाउ डू वी फ्रीज इट? नहीं, याद नहीं है। सी, व्हेन यू राइट क्लिक, वो रो है ना, उसको राइट क्लिक करे, राइट? उसके नीचे व्यू मोर रो एक्शंस बोलकर है, उसमें देखो। उसमें यू विल गेट एन ऑप्शन लाइक फ्रीज अप टू रो वन। ऐसा उस पर क्लिक कर दिया। अब क्या हुई? ये लाइन फ्रीज हो गई। ठीक है? अब व्हेन वी ट्राई टू सॉर्ट इट, सी, डेटा सॉर्ट शीट कर रहे हैं। डेटा पर गए, सॉर्ट शीट, ए टू जी क्लिक करें, इट विल बी सॉर्टेड। डेटा को सेलेक्ट करें, डेटा पर गए, सॉर्ट शीट, सॉर्ट, ए टू जी। अब देखो, ए वाले पहले आ गए, ए, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई, एफ, जी, एच, आई। सॉर्ट हो गया ना, ए टू जी हो गया, राइट? अनदर वे इज जी टू ए, उसका उल्टा भी कर सकते। दैट इज अबाउट डेटा सॉर्टिंग। एनी डाउट्स इन दिस? नो मैम। ओके। मैम डेटा सॉर्टिंग मतलब बेसिकली हम ए टू जी तक मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। डेटा सॉर्ट करना है तो ए टू जी असेंडिंग, व्हाट वर यू सेइंग? मतलब बेसिकली हम एक एक ऑर्डर में लगा रहे हैं ना मैम, नेम्स को। हाँ हाँ, करेक्ट। अगर आपको नंबर्स भी करना है, 1 2 3, असेंडिंग डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। ये तो सॉर्ट करें अल्फाबेटिकली। अभी आप न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं। कैसे? सपोज दिस वन एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के आईडीज क्या है, नंबर्स है सारे। तो आई एम सेलेक्टिंग दिस कॉलम। अब देखो, इफ आई एम सेलेक्टिंग लास्ट नेम, लेट से फॉर एग्जांपल लास्ट नेम आई एम सेलेक्टिंग, तो यहाँ डेटा में क्या आ रहा, या फिर फर्स्ट नेम ओनली, दिस वन ओनली, या आई एम सेलेक्टिंग फुल? we will get A to Z, Z to A option ना। अभी रेंज में we have advanced range options, column। मैम अब मुझे डाउट है, शॉर्ट शीट क्या है, शॉर्ट रेंज क्या है? अच्छा, देर आर टू वेज इन विच वी सॉर्ट इट। ठीक है? सॉर्ट शीट मतलब पूरी एंटायर शीट सॉर्ट हो जाती है। जैसे सॉर्ट शीट में गया आप, ठीक है, सो एंटायर डेटा जो भी जितना भी है उस पर वर्क करता है। सॉर्ट रेंज है ना, सो थोड़ा सा आप रेंज ऑफ सम रेंज ऑफ डेटा यू विल सेलेक्ट। अब सपोज यहाँ से यहाँ तक यू सेलेक्टेड, उस पे डेटा पर गए, सॉर्ट रेंज, इसे सॉर्ट कर, उतने पे ही इफेक्ट होता। रेस्ट ऑफ द डेटा won't get affected. That is about sort range. Some range of data will be affected, तो उतना ही you will select and you will work on it. That is the difference. Sort sheet मतलब पूरा complete sheet. Sort range means only particular range of data will be affected. That is the difference. ठीक है? क्लियर मैम। Okay. Now let's see what is data filtering. ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? अबाउट डेटा सॉर्टिंग। उसके टू टाइप्स यू हैव सीन, सॉर्ट शीट, सॉर्ट रेंज, राइट? मैम अभी डेटा लेट्स, शीट शीट्स में जाके करना ना। हाँ, शीट्स में करना, गूगल शीट्स में है, यस। नाउ सेकेंड वन, बी बिट इज डेटा फिल्टरिंग। तो लेट्स गो विथ दिस डेटा ओनली। ये सारा है, इतना सारा डेटा है, राइट? सपोज यू वांट टू
filter the data. सपोज हम लोग डिपार्टमेंट सेलेक्ट, फर्स्ट वी नीड टू गो टू डेटा, डेटा मेन्यू आइटम है, डेटा कर लिए सेलेक्ट, यहाँ पर वी विल हैव अ ऑप्शन कॉल्ड एज क्रिएट अ फिल्टर, उस पर क्लिक कर लिए, डन. सो वी कैन फिल्टर एनी कॉलम, वी कैन चूज एनी कॉलम. सपोज यहाँ पर जेंडर में गया, जेंडर में मेल फीमेल दोनों है, सपोज यू ओनली वांट मेल, ओके, तो ओके कर दिए. सो सी फिल्टर होके ओनली मेल आ रहा है यहाँ पर, योर डेटा गॉट फिल्टर्ड, राइट. या उसके बाद डिपार्टमेंट में लेट्स ट्राई, यहाँ पर एक फिल्टर, यहाँ पर एक छोटा सा आइकन नजर आ रहा है ना, उस पर इफ यू क्लिक यू विल गेट दिस बुक. नाउ लेट्स से वी ओनली वांट आईटी एंड इंजीनियरिंग, so we will only select that one, press on OK. तो सी इंजीनियरिंग आईटी इतना ही आ रहा, ठीक है, ऐसा कुछ. So there are many other options also, like filter by color. अभी यहाँ पर हम लोग कोई सेल्स को पर्टिकुलर कलर्स तो नहीं दिए, अलग अलग कलर्स रहे तो कलर्स से फिल्टर करते हैं. या फिर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फिल्टर बाय कंडीशन. So there are some options, like koi cell is empty, is not empty, if it is containing any text, if it doesn't contain any text. Text start with, suppose आपको names चाहिए starting only with A, और name चाहिए starting only ending only with A, ऐसा. Text is exactly date, before, after, greater than, less than, ये सारे, you have so many conditions over here, you can select any accordingly, whatever you want. And last one is filter by values, that we just did. यहाँ पर check and check करे ना, that is filtering by values. So these are the three ways in which we can filter our data. Any doubts in this? Yes or no? Tell me in the chat. नो नहीं मैम. मैम, कंटिन्यू. Okay. अभी लास्ट है टेक्स्ट एज वेल एज मैथमेटिकल फंक्शंस. ठीक है, इसका हम लोग करे थे, द थियोरिटिकली आई एक्सप्लेन, सो आई विल जस्ट शो यू हाउ टू डू इट. फर्स्ट लेट्स सी, टेक्स्ट फंक्शन मींस इट विल वर्क ओनली ऑन स्ट्रिंग्स, मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पे. यू आर सी एस स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज अ कैरेक्टर, व्हाट इज अ स्ट्रिंग, राइट. ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मतलब वर्ड्स, उस पे सब वर्क करते, दैट इज नोन एज टेक्स्ट फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस, यू नो मैथमेटिकली जो वर्क करते. नाउ अरेबिक, फर्स्ट अरेबिक लेट्स ट्राई. व्हाट डज इट डू? मैं यहीं पर कहीं कर रही हूँ, यहीं पर बिलो दिस. सो फर्स्ट यू नीड टू रिमेम्बर, कभी भी आपको फंक्शन अप्लाई करना है तो यू नीड टू राइट इक्वल्स. ठीक है, इक्वल्स अरेबिक से, यहाँ पर आपको बता रहा, भी यहाँ पर सजेशन भी आ गया. ओपन, व्हाट डज इट डू यू रिमेम्बर अरेबिक क्या करता? It will convert the Roman numeral to the number. Suppose I want x का, ऐसा ऐसा कुछ रहता ना न्यूमेरिकल, उसका नंबर क्या रहता, उस पर प्रेस एंट. Why is it showing error? Formula is, what is its formula? Arabic. ऐसा ही करते इसको. सी, quotations we will add x capital, enter. सी, x का क्या रहता है 10, इट रिटर्न अस विथ 10, उसकी वैल्यू. सपोज हम लोग ऐसे लिखे 15 के लिए
it returned 15. So basically numerical जो values रहते हैं उसका it will return the values. Roman values जो रहते हैं उसके numerical values it will return. The decimal values it will. Any doubts in this Roman, Arabic? Next one we have char. Like it will give us the यूनिकोड नंबर. एक टेबल रहता हर एक. यू नो व्हाट इज कैरेक्टर राइट. एवरीथिंग A to Z 0 to 9 एनी सिंबल एनी रैंडम सिंबल एवरीथिंग इज अ कैरेक्टर. सो हर एक कैरेक्टर के लिए देर इज अ पर्टिकुलर कोड इन यूनिकोड टेबल. एक टेबल बना हुआ है हर एक के लिए. सपोज ए है उसके लिए 65 बोलकर कोड है. ऐसा हर चीज के लिए कोड है. एक नंबर स्पेसिफाई करती है हम लोग हर एक कैरेक्टर के लिए. ABCD 0 1 2 3 हर चीज के लिए. एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए एक नंबर है. एवरीथिंग हैज अ कोड. उसके लिए उसका कोड फाइंड आउट करने के लिए इट विल रिटर्न द कोड. हम लोग कुछ भी यहाँ पर मेंशन करें तो इट विल रिटर्न इट्स कोड. So suppose I'll mention A at the rate. I guess the so it's the opposite. We will mention the code. It will give which thing it is. Suppose I'm mentioning 65. See, it will give A. As I told you, 65 A के लिए है, right? So आप कुछ भी mention करते number, it will say कि वो किसका code है. Suppose I'm giving 97. फिर से A आता small a. See, 97 is for small a. 65 is for capital A. Like that. Suppose I say 10. It is for space. 15. 14, ma'am. Not written anything. Suppose I give 76 L. 68 D. ऐसा कुछ. So it will you will give some code. It will return some उसका character. Now we have concatenate. See, concatenation means joining two or more strings. So concatenation में we will first mention the first value, then the second value, followed by the second value. For example, first value may be hello, second value may be world, like that. So let's give it concatenate. First thing we need to write equals, then उसके बाद then only it will become a function. I'm writing first string as hey, giving a space as well, comma, second string as MSCS1. I'm closing it. See, those अलग अलग strings we gave, it joined it. अब let's say I don't give any, if I don't give any space over here, कैसा आ जाता? पूरा attach हो गया. Done. So दो अलग अलग या different you are giving some strings. See, सब join हो गया. First string, second string, third string. That is about concatenate. Concatenate करना means join. Now we have exact.
Again, it will find out if the